Hello everyone, my name is Ramaster Rai. Welcome at MMC. Guys, I will tell you that how you will improve your pronunciation. Guys, you can improve your pronunciation different many sources. And I will tell you that guys, you know why children are asked to cram poems. आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में उनको पोएम सुनाया जाता है। बच्चे छोटे छोटे पोएम्स को सुनते हैं, बोलते हैं, क्रैम करते हैं, सुनाते हैं और बड़े जॉय के साथ। गाइस, मैं बता दूं आपको, पोएम को क्रैम करने से भाषा आपके ब्लड और वेन्स में समा जाती है। मीन्स इफ यू क्रैम द पोएम विथ लव, with attraction, with that sincerity and with expression, the language will be mixed up in your blood and veins. ये भाषा आपके दिल, दिमाग, नस नस में और ब्लड में समा जाएगी. Then guys, your language will be 100% natural. Okay, now guys, so what is the purpose of cramming the poem? If you cram the poem, your pronunciation will be improved. Okay, so guys, this is what guys आपने इसको जरूर पढ़ा होगा. और guys, close your eyes and read it many times and you will really learn. Guys, now this is what twinkle twinkle little star. Guys, मेरे साथ आप रिपीट करेंगे तभी इंजॉय करेंगे. बोलिए twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. How I wonder what you are. Up above the world so high, up above the world so high, like a diamond in the sky, right? When the burning sun is set and the grass with dew is wet, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. Guys, कम से कम twice and thrice you have to read. अब देखिए इससे pronunciation कैसे सुधरता है. I will tell you, right, that how you will improve your pronunciation. So guys, first you repeat these words and then I will read the poem once again. Okay, so guys, say twinkle. Repeat after me. Twinkle twinkle twinkle, right? Little little. So guys, जब आप इस वर्ड को कई बार प्रोनाउंस करेंगे, लिटिल 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 लिटिल, ये हो जाएगा लिटिल, right? So guys, I have little problem, right? So next one, how, how. Next one is wonder, wonder. Write all these words, guys. Take a screenshot and please write down all these words in your copy. Then you will really enjoy more. Okay. This is guide what do you want? What is this? What is this? Right? You are responsible. Up. This is what this is a sell. Then you sell. So after pronouncing this word, you will enjoy more in poem. Okay? Now this is what guys, this is what above, sugar, high, like a diamond in the sky, right? High, world, like, repeat after me, like, world, okay? Diamond, sky, when, repeat after me, when, right? Burning, sun, right? Is set, and right, little light all night. Okay guys, then and now you pronounce, you will really enjoy it. Okay, let's go back. Okay guys, so guys, you will repeat after me, right? अब देखो, मान कर चलिए कि एक बच्चा ऐसा है जो बहुत खुश है, आज उसका बर्थडे है, तो कैसे पोएम को सुनाएगा, राइट? वो सुनाएगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. मेरे साथ बोलो बेटे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. अब अगर वो म्यूजिक है, सब कुछ है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, क्योंकि वो खुश है.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Right? Up above the world so high, up above the world so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky. When the burning, when the burning sun is set, and the grass with dew is wet, then you show your little light, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. एक बच्चा जो बहुत राइट ये एक उस बच्चे का है जो बच्चा क्या कर रहा है, उसका बर्थडे है, बहुत खुश है, वो डांस करके झूम करके पोएम सुना रहा है। एक बच्चा बहुत ही मधुर वाणी वाला बच्चा है, वो उस पोएम को कैसे सुनाएगा? मेरे साथ आप तुरंत गाइए, जैसे मैं गाऊं बेटे, मेरे साथ गाओ, बहुत एंजॉय करोगे। शर्म आ रही हो तो आंख को मूंद लो, आंख को बंद कर लो और मेरे साथ रिपीट करो। राइट, लेट्स गो अहेड। Twinkle, twinkle, little star. Guys, twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. How I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the burning sun is set, when the burning sun is set, and the grass with dew is wet, then you show your little light, then you show your little light. Twinkle, twinkle all the night, twinkle, twinkle all the night. अब अगर कोई बच्चा किसी घर में कोई एक्सपायर कर गया, उसकी दादी एक्सपायर कर गई हैं, तो कितना दुखी होकर के वो इस पोएम को सुनाएगा। राइट, थोड़ा उसकी भी कोशिश करते हैं। राइट, बच्चा दुखी है, बहुत दुखी है, तो वो कैसे सुनाएगा? बहुत दुखी होके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are. Up, up above the world so high, like a diamond in the sky. When the burning sun is set, and the grass with dew is wet, then you saw your little light, twinkle, twinkle all night. तो गाइज, एक छोटा सा प्रयास था, जब इंसान दुखी होता है तो अपने पोएम को कैसे सुनाता। तो गाइज, एक ही पोएम को मैंने 2-3 फ्लेवर में सुनाने का कोशिश किया। बेटा, मेरी बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है, आपकी आवाज़ मुझसे बहुत बेहतर होगी, 1000 गुना बेहतर होगी। बेटे, आप बहुत अच्छा सुना सकते हो, बहुत अच्छे सुना सकते हो। आप इस पोएम को म्यूजिक के साथ सुनाओगे, बहुत सुंदर लगेगा। इस सुना करके, बना करके मेरे पे व्हाट्सअप जरूर करना बेटे, मैं ये देखूंगा आपने कितना प्रयास किया। देखो बेटे, इससे प्रोनाउंसिएशन कितना सुधरता है। आप कई बार जब बोलते हैं, कई बार सुनते हैं, देखिए उच्चारण कैसे सुधरता है। देखिए, मेरे साथ बोलिए और उच्चारण भी इंप्रूव करिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अप above the world so high, like a diamond in the sky. When the when the burning sun is set, and the grass with dew is wet, then you show your little light, twinkle, twinkle all the night. बेटे, इससे प्रोनाउंसिएशन बहुत तेजी से सुधरता है। So guys, it's my humble request, please read this poem many times, and then you will really enjoy. Your language will be natural and you will learn something. Okay, let's go ahead. Alright guys, so these are the words for pronunciation and I pronounce all these words. अब एक थोड़ा सा और पोएम को ले लेते हैं, एंजॉय कर ही लेते हैं। राइट, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। राइट, ओके। अब देखिए इससे कितना प्रोनाउंसिएशन सुधरता है हमारा। पहले हम लोग आगे चल के थोड़ा देख लेते हैं वर्ड को। जैसे बेटे शुगर, शुगर, टेलिंग, क्या है बेटे? टेलिंग। राइट बेटा, होता है माउथ। और जी एक बहुत बड़ा अच्छा वर्ड है YES, इसका उच्चारण होता है यस। क्या होता है?
Johnny, Johnny, yes, Papa. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, eating sugar. देखो बेटे, eating को जब आप कई बार बोलोगे, eating को जब आप कई बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा eating, eating, eating sugar. No, Papa. Telling lie, lie नहीं, telling lie. No, Papa. Then open your mouth, open your mouth, ha ha ha. Right? So you can read it many times like Johnny, Johnny, yes Papa. बोलो मेरे साथ आप लोग, don't be shy. Johnny, Johnny, yes Papa. Eating sugar, no Papa. Telling lie, no Papa. Then open your mouth, ha ha ha. Right. Simply, for pronunciation, we will learn Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lie, no, Papa. Then open your mouth, ha, ha, ha. So, guys, these are the pronunciation part, okay? Right, sugar, telling lie. One more poem, that's a simple poem. Early to bed and early to rise. Early to bed and early to rise, right? Early to bed and early to rise, right? Makes a man healthy, wealthy, and wise, right? Early to bed and early to rise. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Okay, so guys, I think if you have any poem, so make an effort to cram this poem. So guys, I made an effort. I'm quite sure you all enjoyed it. Okay, let's go ahead now. So these are the pronunciation which I have already pronounced. Diamond. Again you repeat diamond. Okay, now sky. Repeat after me, sky. Again you repeat sky. Okay, burning, burning, right? Now and okay, with, I'm with you. Something is burning. I smell something. Something is burning, right? Like that. So guys, and now I will tell you something about spoken English course. Okay, spoken में तो जरूरी है, थोड़ा थोड़ा बोलना जरूरी भी है ना. अब देखिए, आज हम बताएंगे use of had to and had to. हैज टू और हैड टू का प्रयोग कहां करते हैं? जहां बाध्यता की बात आती है. जैसे मैंने कहा बेटा, यू हैव टू कम ऑन टाइम ना, आपको समय पे आना पड़ेगा, मतलब आना पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो चॉइस. ओके, लाइक दैट. लाइक अब बाध्यता को दर्शाता है, तो मैंने कहा यू हैव टू कम ऑन टाइम. हो एवरीवन, यू हैव टू अटेंड माय क्लास ऑन टाइम. रेडी? ओके. She has to complete the task. She has to complete the task. She has to complete the task. And you have to pay the fees. Guys, if you are learning, if you have taken admission, then you have to pay the fees. Okay? Now, let's go ahead. Now, अब देखो बेटे, ये कॉन्वर्सेशन है. जैसे मैंने कहा कि अब देखिए मैं हूं और कोई बच्चा राहुल है, तो मैंने कहा कि मिस्टर राहुल. अब राहुल क्या कहेंगे? यस सर. मैंने कहा मिस्टर राहुल, यस सर. राहुल बोलेंगे यू हैव, देखिए मैंने बोला ना, यू हैव टू अटेंड माई क्लास सीरियसली, यू हैव टू अटेंड माई क्लास डेली. अब राहुल क्या बोलेंगे? यस सर. राइट? ओके, लाइक दैट. फिर देखिए, अब बॉस हैं और मिस्टर शर्मा जी हैं. मिस्टर शर्मा कह रहे हैं, मिस्टर शर्मा आप कहीं बैठे हुए. यस सर. मिस्टर शर्मा, यस सर. राइट? फिर उन्होंने कहा यू हैव टू गो देयर एट वंस. You have to go there at once. अब शर्मा जी कहेंगे yes sir, okay sir, right sir. कोई ऑप्शन तो है नहीं दूसरा, right? Okay, now let's go ahead. Now guys, I have given you lots of sentences, okay, for practice. मैंने कहा मिस्टर तिवारी. अब तिवारी जी जो भी हैं, yes sir. मिस्टर तिवारी, yes sir. Right? You have to give me some money. Okay sir, at once I'm paying you. Okay? Now, फिर मैंने कहा मिस्टर पांडे. पांडे क्या बोलेंगे? यस सर. मिस्टर पांडे, यस सर. राइट? यू हैव टू पे फाइन. यस सर. आई विल पे फाइन सर. डोंट वरी सर. आई विल पे द फाइन ऑन टाइम. ओके? नाउ, मिस्टर अतुल. यस सर. यू हैव टू फॉलो लॉ एंड ऑर्डर.
yes sir, okay sir, right sir. और ये भी कहते हैं थैंक्स फॉर दिस सजेशन, ओके। मिस्टर संदीप, मैंने कहा मिस्टर संदीप, आपने कहा यस सर, संदीप जी बोलेंगे, राइट, यू हैव टू डू योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर होमवर्क, ओके सर, व्हाई नॉट सर, आई विल डू सर। फिर मैंने कहा मिस स्वाति, यस सर, मिस स्वाति, यस सर, you have to learn English, okay sir, why not, I will learn English। Miss Kiran, you have to attend class seriously, उन्होंने कहा yes sir, I will attend class seriously। मैंने कहा Mr. Hariom, you have to follow me, you have to follow me, हरिओम, yes sir, I will follow, okay। Mr. Garo, you have to think about your future, Mr. Garo, you have to think about your future। Now guys, you have to make 10 to 20 sentences like this. I'm quite sure guys, you will learn a lot, okay? You will practice a lot. So this way you will learn, right, the use of has to and have to। Next one is very simple, had to। had to का मतलब आप जानते ही past में, जैसे मैंने कहा I had to go my school, बाध्यता past की है ना, I had to attend my class daily guys, right, and I had to follow my father's order, apostrophe रहेगा, I had to follow my father's order, I had no option, right, okay। I had to complete my homework daily, I had to complete my homework daily, okay। So guys, I think I completed this lecture। So guys, it's my humble request that if you really learned something, if you really enjoyed, so guys, don't forget to like this video, and please, if you do not like, then you can dislike it, okay? Now the power is in your hand, and guys, if you really learned something, if you got something new, you please pass and give your valuable comment, then I will be highly obliged of you। And second thing guys, please share this video to your friends, near, dear and sweetheart one, okay? And now guys, please press the bell icon so you'll be notified all the videos। So guys, thanks for watching this video, good day all and take care all, thank you।